स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग सीजन 11 के आज के दूसरे मुकाबले में। एक तरफ हमारे बीच में डैक्सको के कैप्टन, हमारे बीच में मयंक और हमारे लेफ्ट में पवन हमारे साथ में है। टॉस होने वाला है, सिक्का उछाले जाने की तैयारी। स्पार्क मिंडा वर्सेज डैक्सको के बीच में यह मुकाबला होने वाला है। दोनों टीम के कप्तान तैयार है और इधर इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी विजन। टॉस का बॉस कौन बनेगा? मौसम बहुत ही सुहावना है और विजन टॉस के बॉस से यह तय हो जाएगा कि इस मुकाबले का टॉस का बॉस कौन बनता है। और कॉल करेंगे पवन। स्पार्क मिंडा के कप्तान पवन कॉल करेंगे और ये टॉस के बॉस बने हैं। पवन बहुत बहुत मुबारक, विजॉन टॉस के बॉस बने हैं और सबसे पहले आपको ये विजॉन की तरफ से टॉस का बॉस बनने के लिए डीओ से नवाजा जाएगा। पवन, आप विजॉन टॉस के बॉस बन गए हैं, फैसला क्या ले रहे हैं आप? बैटिंग फर्स्ट बल्लेबाजी करेंगे। इस सत्य को देखते हुए क्या लगता है कितना स्कोर इस पे एक डिफेंडेबल टारगेट? 150 160 मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। इस विकेट पे जैसे अभी सता है 150 160 हमारा टारगेट रहेगा। तो कम से कम 150 160 तक हम टारगेट अपना बनाएंगे। लास्ट मैच में 132 रन का टारगेट था और उस वक्त सुपरमैन की गेंदबाजों ने अच्छी कोशिश की, 6 विकेट चटकाए थे दूसरी इनिंग में। तो आपको लगता है कि 150 160 अगर आप बोर्ड पे टांगेंगे तो एक अच्छा स्कोर होगा? क्योंकि बॉल काफी अच्छा घूम रहा है और काफी अच्छा टर्न भी हो रहा है बॉल पे, तो 150 160 अच्छा स्कोर होगा इस विकेट पे। स्पिनर की भूमिका काफी अहम होने वाली है आपको? बहुत ज्यादा स्पिनर की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है इस विकेट पे। चलिए लेट्स सी, देखते हैं। हमारे साथ मयंक है और मैं जानना चाहूंगा मयंक, ये टॉस आपके लिए कितना अहम है? और टॉस जीता है उन्होंने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, यानी कि आप चेज करेंगे और पहले बॉलिंग करेंगे। सर अगर मैं भी टॉस जीता तो बैटिंग ही करता। पवन महीने का यूज पिच है, काफी क्रैक्स हैं, स्पिनर्स के लिए काफी मदद होगी। इट्स अ गुड टॉस टू विन फॉर देम, बट लाइक वी विल ट्रैवल एंड स्कोर स्ट्रीट। और इस पिच को देखते हुए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि स्पिनर्स को काफी मददगार ये पिच है, तो कितने स्कोर पर रोकने की कोशिश करेंगे जो कि आपको चेज करते वक्त आसानी रहे? सर पिछले मैच को देखते हुए 120 130 पे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। बारिश का माहौल है, बारिश होती है तो डकवर्थ प्लेस में हमारा फायदा रहेगा। चलिए लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। ये है हमारे साथ डैक्सको के कैप्टन मयंक और हमारे साथ स्पार्क मिंडा के कैप्टन पवन ने टॉस जीता है। विजॉन टॉस के बॉस बने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। Good job. So Spark Minda, they have won the toss and they have elected to bat first. This has been the order of the day. Yesterday also, the team who have won the toss, they elected to bat first. And today in the first match also, we just finished half an hour back. Also the team that won the toss, they elected to bat first. They were in a spot of water and eventually
they lost a very crucial match near finish by just 3 wickets. So what will be the order of the day, Anwar? Probably the pitch hasn't changed much. We haven't seen much. We've just had the talks. So, but what's your thoughts? मुझे लगता है कि यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला उन्होंने सही फैसला लिया है और अभी ये पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर है। हालांकि स्पिनर्स को काफी मदद मिल रही है, जैसा कि आपने देखा नितिन आहूजा ने, लेफ्ट आर्म स्पिनर नितिन आहूजा ने 4 रन महज 10 रन लेकर 5 विकेट चटकाए हैं। तो यहाँ पर स्पिनर्स का रोल काफी अहम होने वाला है इस मुकाबले में भी और तेज गति के गेंदबाजों की अपेक्षा। हालांकि शुरू में नई गेंद से जब बॉल जब तक पुरानी नहीं होती इंटरेस्टिंग रहता है कि सीमर्स किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह से नई बॉल से सीम का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सीमर्स हैं तो आपको फायदा मिलता है। आवाज नहीं आएगी, माइक वहां रखा है। जो ब्रीज है विद द ब्रीज बॉलिंग करेंगे अगर आप It's important. Let me tell you, Nitin Ahuja was a spinner, and he's a legendary name in the corporate cricket industry. And the back foot, spinners who have been playing too much of the back foot. He got 2 wickets in 2 balls and almost had a hat trick today. Nitin Ahuja. So players who are actually a back foot player, they need to be very, very wary of this wicket. I don't know how much of these players have actually played on this wicket. But you have actually mentioned, you actually been very spot on when you said that the spinners had actually played a very significant role in whatever the side, and also the lefty righty combinations. But over the wicket, round the wicket, they slide the ball. If they are trying to invite the batsman to drive, there's been you can almost see how the ball was spinning. And Nitin Ahuja is actually a discreet character, and he has showed us that if you can put the same channel line and length, that you are capable of getting good amount of wickets from this, get good amount of purchase and eventually wickets in your tally. मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। आज इस तरीके से लेफ्ट आर्म स्पिनर की भूमिका रहती है और सामने वाली टीम के बल्लेबाजी टीम के पास कितने लेफ्ट हैंड बैट्समैन, ये भी बहुत अहम रहता है क्योंकि जिस टीम के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हैं तो अपोनेंट साइड ये कोशिश करता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो उनकी काट ढूंढने के लिए। अक्सर आपने देखा है कि अक्षर पटेल को मैंने गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा, कई श्रृंखलाओं में देखा कि जब लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्ट्राइक पे रहते या फिर क्रीज में रहते तो उनसे गेंदबाजी करवाने से बचते रहे कप्तान रोहित शर्मा। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर जिन भी टीमों के पास है, दूसरी टीम के पास क्या लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन काफी अहम रहता है। हमें देखने में आसान लगता है, हमें देखने में चीजें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन क्रिकेट में ये छोटी छोटी बारीकियां, छोटे छोटे पहलू ना आपको बहुत अलग पैमाने पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर काफी अहम रहने वाला है कि टीमों के पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन किस तरीके के हैं, क्या है, वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर किस तरीके से सामना करेंगे, फेस करेंगे लेफ्ट आर्म स्पिनर का, ये बहुत अहम होने वाला है। Talking about left arm spin, it came into my mind. Aussies, the team Australia, you can see every time, Mitchell Starc, he comes up with his left arm swing and the devastating Yorkers also. Today, why I put this point is today the man in green, Wipro, they started with a left arm spinner, left arm seamer. You can see the ball immediately had impact. It kept swimming. It's a different thing that he went for boundaries, but the ball did swing. And in these conditions, when the weather has actually started getting more gloomer during the day, I think if there are left arm seamers, they should actually start introducing them right from the very beginning. Try and put pressure on the opening batsmen, how strong they are. But left arm seamers definitely they put a very different and a definite pressure on the opening batsmen. बिल्कुल इनकी बहुत अहमियत रहती है पिच की सिचुएशन और वहाँ की उस ग्राउंड की को देखते हुए जिस तरह के वहाँ के हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है। चाहे लेफ्ट आर्म सीमर की बात करें या लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करें, लेकिन एक एज अ टीम मैनेजर, एज अ कोच, एज कैप्टन आप हमेशा उस माहौल को परखते हैं, उस पिच के मिजाज को पढ़ते हैं, उसके बाद आप अंतिम रूप से अपनी टीम का चयन करते हैं कि किस तरीके से ये पिच मददगार है, स्पिनर्स को मददगार है या फास्ट बॉलर को ये मदद करेगी। उसी तरीके से आप अपनी टीम का चयन करते हैं और उसके बाद उसे आखिरी जामा पहनाने के साथ अपनी टीम को जीत के साथ उस मुकाबले को जीतना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों टीमें जरूर इस बात को
ध्यान में रखी होगी कि यहाँ पर जिस तरीके की सतह है, आकर के पिच का मिजाज देखा होगा, जिस तरीके से पिछले मुकाबले का रिजल्ट आया है उसको भी देखा होगा, तो शायद इनके जहन में है। जिस तरीके से कप्तान पवन ने कहा कि स्पिनर्स को काफी मददगार पिच है और इस पर एक बार अगर आप 150 160 के आसपास इसको खड़ा करते हैं तो एक अच्छा फाइटिंग टोटल होगा। It's going to be a very, very good fighting total. I think the fielders are already there. They are. We can hear the hurdle sound, the far cry. And I'm sure it's going to be another very interesting match here. Second match of the day of this Dafa News Pro Corporate League. I'd like to thank the sponsors, IFCO, Max Protein, our title sponsor Dafa News, of course, KI Wires and Cables, VJone, our grooming partner. All smart cricketers will probably grow even handsome until the time they way home, and if they definitely go and lift the trophy, the smartness will get brighter day by day. And not to forget our principal sponsor SG Cricket Ball Anwar. बिल्कुल ऐसी की गेंद भी किस तरह का अपना रंग दिखाती है, किस तरह से जलवा दिखाती है, लेकिन मेरी नजरें पहले 6 ओवर और आखिरी के मिडिल ओवर में मेरी नजरें रहेंगी, क्योंकि नई गेंद से सीमर्स किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं और मिडिल ओवर में स्पिनर किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे, यहाँ पर कमेंट्री के दौरान इस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन इस वक्त टॉप ऑर्डर के सलामी बल्लेबाज इस बार मिंडा की पारी का आगाज करने के लिए तैयार है और इधर हमारी कमेंट्री टीम, मेरे साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ और मैनवर सिद्दीकी आपके साथ लाइव एक्शन के लिए तैयार हूं। चलते हैं सीधा कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर हमारे साथ स्कोरर स्टेटिशियन निश्चल तैयार है वहां पर अपनी भूमिका को निभाने के लिए, और हमारे कैमरामैन भी तैयार है लाइव एक्शन को दिखाने के लिए। तो बने रहिए दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग के साथ। इस टूर्नामेंट के प्रायोजक दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग, प्रिंसिपल स्पॉन्सर एसजी नाम है विश्वास का, एंड वीजॉन ग्रोमिंग इंडिया, एंड मैक्स प्रोटीन, केईआई वायर एंड केबल्स, इफको पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। तो बने रहिए और एंजॉय कीजिए, आनंद उठाइए इस मुकाबले का। Smart Minda, they won the toss. Elected to bat first, both the batsmen on the field of play. Nice gloomy conditions. Seems like we're playing the English County Championship, actually, with no sun. Looks so much like English conditions. Lush green outfield, greenery all around, nice breeze blowing. So all set for a very good match. The second match of this Dafa News Pro Corporate League here at the PCL Sports Complex in Noida.
So all set here for the first ball to be bowled of this second match of the Dafa News Pro Corporate League Season 11. Ladies and gentlemen, buckle up your seats. Here's the first ball. Very wide outside off stump. So start offing of the proceedings with the first runs on the board with an extra for the man in black. Looks like the New Zealand cricket team is on the field. Two batsmen from New Zealand. And under the glooming conditions, they're looking even brighter. Sims versus the man in blue. Wilkin. Yes, the second ball. Very well played. The ball did rise up to him. He was very cautious. To a little bit on the back foot. Played it cautiously towards the main net point. Yet to get off the mark off the bat. But the team is already underway with an extra. One for no loss. Lovely afternoon to play cricket. On the leg side, hits it very, very well and onto the boundary for 4 runs. First runs off the bat and the score will move to 5 for no loss. A little bit on the leg side and he just had to give face of the bat towards the ball and the ball happily went to the boundary for 4 runs. So 5 runs and it's all good and very motivating for the batsman to get off the mark with the boundary. It gives so much of infuses so much of confidence to you when it gets off the mark. And to get off the mark with the boundary is a very surreal feeling. We have seen some flurry of boundaries and sixes being hit in the first match. Don't expect anything different in this second match also. Outside off stump. And umpire Ashwini Kumar feels it's well within the line. A polite inquiry from the batsman. But the umpire feels it safe inside the line. He did very well. A bit of a slinging action from the bowler. And we have already seen China Super Kings Patirana now slinging action like Lasit Malinga. Outside of stump again, tap towards the man at third man will get a single. The call was for 2-2-2. The communication was good. Both batsmen had the eyes on the ball. But that's very, very important. We've seen a series of run out in our last weekend matches also, and today in the very first match also. Ones and twos, ahs and oohs from the fielders. And it gets very, very confusing. So the communication is of paramount importance. Oh, that's a delivery. That's a treat of a delivery. This seemed like test match cricket. I did mention that probably you're watching some English County Championship. Last green outfield and gloomy day. And he has proved me right. It's always such a treat to see the bouncer, the batsman serving away. Very nice bowling. Very good bowling again off the back foot. But the stumps have been exposed. Be very mindful of that thing.
He was probably trying to play it on the leg side, but saw that ball was pegging in towards him, and that will bring the end of the first over. 1 over has been bowled, and Spark Minda are 6-0 loss versus Daxko. Six for no loss for Spark Minda. They will look to infuse some spark into the batting. In fact, in every department of the game, this is important that they start off well. They haven't lost anything as of yet. 6 for no loss, very cautious start. One boundary off the bat to started off the proceedings with a wide, but off the bat it started off very well. Then a bouncer, some moves and and very nice start from the bowler from Ashwini Chaudhary. Now Praveen has the bat in his hand to face. He has already faced 2 deliveries for no runs. Ankur is 5 not out of 4. Outside off stump, didn't count well down to the batter, but not cleanly collected by the fielder at Gully. And it could have been a very risky single had the ball been collected cleanly, but they have managed to rotate the strike. The score moves on to 7 for no loss for Spark Minda. In the air, both the fielders giving chase. Eventually manages to cut it off. And small droplets of rain have started falling down on the ground here at the PCL Sports Complex here in Noida. But nothing to worry as of now. We still have the game in play. Played it very well, dug it out. Could have been a risky single, but they managed to dug it out and rotate the strike. Score moves on to 9 for no loss for Spark Minda. The rain hasn't picked up very well. Fingers crossed that we can have this match in full. Here's the next ball. Outside off stump, slashes it. And that's a confusion right in the middle now. The ball didn't hit the stance, luckily for him. And eventually managed to go inside his crease. Lot of confusion. Wait, no, come, and eventually they crossed, and the ball did cross the stump but didn't hit it. He was very, very lucky to have survived at the other end, but would have had to make the long walk back to the pavilion. But he's there to survive another day. It was not very short outside of some. It was on the middle and off. Probably was trying to give himself some room. The score remains the same, 10 for no loss for Spark Minda. Need to be very careful. We have seen a lot of edges through the wicketkeeper in the very first match, and you feel that the ball would do something, but doesn't do much. Jabbed off very, very well, but there is a fielder station definitely for that. And no run, and that will finish the proceedings. 2 overs have been bowled. Spark Minda are 10 for no loss versus Daxko. The captain will be captain from Daxko. He will be very, very happy with the proceedings as of now, but we would love to see one or a couple of wickets under the wicket column. But no alarm bells as of now for the captain of Daxko. The runs haven't started flowing in thick and fast as of now for the man in black, Spark Minda. Short ball, a gentle appeal, and he's given him the first wicket down here
for the man in black, Spark Minda, 10 for 1. It looked like a gentle appeal from the bowler, but the umpire, Ashwini Kumar, had no hesitation in raising the finger, signaling the end of the first wicket. The man in blue will celebrate in a huddle. Can I say a commentator's curse again? I was just saying that they needed a wicket, and immediately the first ball of the third over produced a wicket, and it was not the way he was thinking to go out. On the leg side, the ball did bounce, and surprisingly, this both the last over and this ball has actually bounced off very well. Was trying to play a tickle shot towards a fine leg, but eventually managed to get something on his glove and into the safe gloves of the wicketkeeper. Spark Minda are 10 for 1, and Ashwini Chaudhary has managed to pick up 1 wicket. 1 for 6 of his 7 deliveries. For Ashwini Chaudhary, he will be delighted. He'll be very happy. He'll love to keep this momentum going. And I'm sure our happy captain Daxko to see the back of the batsman. 10 for 1 for Spark Minda. Wicket immediately off the very first ball. So motivation galore here for the bowler. Very, very short outside off stump. This is good bowling. This is good tight line and length. I'm sure he was expecting this short delivery immediately in this very first over. It's like a wake-up call for him. Most often in Test cricket, you see the Yorkers and all, and the very first ball makes you come out of your dreams. The honeymoon period is over. T20 cricket doesn't allow you any bonuses. Very short again, but this time he'll play it. He was up for it. Glided towards the man at the third man. He'll get off the mark. And the score will now say 11 for 1. Nice economical bowling from Ashwini Chaudhary. He has a very good, nice slinging action. Very much of a side-on bowler, Ashwini Chaudhary. Probably that's the angle he was. That will help. Cross-batted shot, and that will fetch him 4 handsome runs towards mid-wicket for 4. 15 for 1 is Spark Minda. Probably not exactly where he was trying to hit the shot. He kept himself rotating, and he did hit the bat and onto the boundary towards mid-wicket for 4 runs. But still, it is good bowling here from Ashwini. Again was trying to go back. Will it be a boundary? The ball keeps, yes, it just touched the ropes and onto the boundary. At one point, as it was going towards square leg, he never thought that the ball will go towards the boundary, but it had the legs and the power enough to go gently over the ropes, and 4 tough runs for Ankur. Moves on to 15 not out of 10 deliveries, giving him company's Pawan at 1 not out of 2. The score is 19 for 1. 2 back-to-back boundaries here for Spark Minda. 1 delivery now remaining in the third over from Ashwini Chaudhary. He plays very well and very well fielded by the captain himself at the point. Lifts up the morale of the side so much, and that will bring the end of the over. 3 overs have been bowled. Spark Minda are 19 for 1. And we'll be handing over the mic to our Hindi commentator. And I'm sure he will entertain you with the poetry in motion. I don't know much of a poetry, but this guy sitting next to me, he has a lot of things to deliver. Up with you, Anwar, Mr. Anwar Siddiqui. शुक्रिया मयूर। 3 ओवर के बाद 19 एक विकेट के नुकसान पे अंकुर और पवन की जोड़ी इस वक्त क्रीज में है। स्पार्क मिंडा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस है मुकाबले में कप्तान पवन क्रीज में पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए।
अंकुर 15 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक रेट पे नजर आते हुए। और इस बार नए ओवर की शुरुआत ऑफ स्टंप के बाहर बल्ले का मोटा सिरा लेते हुए गेंद थर्ड मैन पे जाती हुई आसानी के साथ अपना छोर बदलने में कामयाब होंगे। स्कोर है 20, एक विकेट के नुकसान पे 3.1 ओवर का खेल अभी मुकम्मल हुआ है। 20 एक विकेट के नुकसान पे। दफा न्यूज प्रो कॉर्पोरेट लीग कॉर्पोरेट का वर्ल्ड कप सीजन 11 पिछले 10 साल बेमिसाल रहे हैं। नए वर्ष में नई सोच, नया एडिशन, नया जज्बा लेकर टीमें मैदान पर उतरी और इस बार बढ़िया कवर ड्राइव और उतनी ही सुंदर फील्डिंग कवर के खिलाड़ी के द्वारा। बढ़िया मुकाबला चल रहा है इस वक्त गेंद और बल्ले के बीच और ये दीवार को भेदना कितना आसान रहेगा। बहुत चुस्त दुरुस्त नजर आए कवर के खिलाड़ी ने और कम से कम 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इस तरह के फील्डिंग का स्तर और जज्बा बढ़ाता है बाकी खिलाड़ियों का भी। अभी तक बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है। इस बार उंगलियां फेरी थी। अच्छा, तेज गति के गेंदबाज मौजूद है। तेज गति गेंदबाजी का आक्रमण बेहतरीन नजर आता है। जहां तक डेक्सको का सवाल है, कप्तान मयंक इस वक्त गली की दिशा में नजर आते हुए। काफी एक्सपीरियंस है, तजर्बेकार कप्तान अपनी टीम को लीड करते हुए। ये पटकी हुई गेंद और इस बार गेंद को पुल करने का प्रयास किया था, उतना अच्छा करेक्शन नहीं था पर गेंद फाइनल एक बाउंड्री की दिशा में 4 रन के लिए दिशा से भटके थे। शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं कई बार गेंदबाज, लेकिन वो कंट्रोल खत्म हो जाता है। अगर आपके पास गति है, आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं तो आपकी कोशिश होती है आप बिल्कुल बॉडी पर अटैक करें, हेड पोजीशन के आसपास शोल्डर के पास गेंद आए, वहां से परेशानी में जरूर डालने में कामयाब रहते हैं गेंदबाज। पर इस बार दिशा से भटके थे। बॉल पट्टी के बाद लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई। ये अच्छा कनेक्शन है पर खिलाड़ी टीम में मौजूद और कैच ड्रॉप कर दिया है। बहुत आसान कैच था। ड्रॉप द कैच, लॉस द मैच। और कैच ड्रॉप करना ये कहा जाता है आपकी दहलीज पर आई हुई खुशी के लौटने जैसा होता है। कर देना इसको। अपना घर का कुछ अर्जेंट काम कर रहा कह रहा है। ये शॉर्ट पिच बाउंसर, तेज गेंदबाजी आक्रमण अच्छा नजर आया है। और इसे पूर्व में भी आपने देखा होगा, जगदीश से पूर्व में भी गेंदबाजी जो हुई है उसमें भी काफी पहला वार्निंग दी है को अंपायर निश्चल ने। बेहतरीन अनुभवी अंपायर्स है। वार्निंग। ये अच्छी गेंद बैक फुट पे गए, ओपन द फेस गेंद को दिशा दी है। चार ओवर के बाद 26 एक विकेट के नुकसान पे स्पार्क मिंडा वर्सेस डेक्सको के बीच यह मुकाबला चलता हुआ। आज के दिन का दूसरा मुकाबला है। आज सुबह से आसमान में बादल, ये काले घने बादल छाए हुए हैं, दूर दूर तक बारिश हुई है। यहां पर भी थोड़ी देर पहले जब हमारे साथी कमेंटेटर मयूर कमेंट्री कर रहे थे कुछ बूंदाबांदी जरूर हुई थी, लेकिन इतनी नहीं। क्या नाम बताया? प्रीत बताया? प्रीत। जगदीश नेगी ने पिछले ओवर में 7 रन दिए थे और बल्लेबाजों की परीक्षा लेने का प्रयास किया था जगदीश नेगी ने। और स्पार्क मिंडा कितना बड़ा स्कोर खड़ा करेगी इस मुकाबले में। अभी तो ये पावर प्ले चल रहा है, 2 ओवर आने शेष है, पर गेंदबाजों की प्रशंसा करने की, बहुत ही किफायती गेंदबाजी की है। बढ़िया लेंथ हिट की है अभी तक इस मुकाबले में। ज्यादा रूम नहीं दिया, ज्यादा आजादी नहीं दी।
चौदह भी करे तो ये वाला भी अपने यहाँ वॉकी टॉकी के वाला नहीं करेगा। क्या हुआ कमेंट्री? दोनों कमेंटेटर कहाँ गए? अरे लाइट नहीं है, लाइट पावर चली गई है, पावर। लाइट तो आ रही। लाइट आते हैं। हाँ ये ला बॉल है सेमी न्यूज़ न्यूज़ नहीं कोई वाली दे एक और वाली डिस्टेंस भाई के पास है सीधा एक बॉल है एक थी ऊपर से तार हिला। कहां दे रहे हैं अरे चेक कर ले वो चल जाएगा पहला वो की बात नहीं है भाई बिठाना उसे बात भाई बैठो आवाज आ रही है तेरी बहुत तेज सैम की आवाज आ रही है तब क्या हो गया? ये माइक ही नहीं बज रहा है। इसको चेक करो यार, क्या हो गया? वो वाली कहां है दो बॉल थे कोई मना कर रहा है एक बॉल छत्तीस रन बने हैं। क्रिकेट के नुकसान भी 4.2 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। अंकुर और पवन की जोड़ी क्रीज में, अंकुर बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 30 रन पे पहुंच चुके हैं। महज 17 गेंदें खेली हैं, बढ़िया कार्य किया अभी तक। और एक बार फिर से क्रॉस लाइन, ये गलती किया था बल्लेबाज ने। एक बार फिर से अंकुर विकेट के ऊपर से मारने का प्रयास कर रहे थे। जी करो ना यार, तुम आवाज सेट करो। ये अच्छा शॉट है, बहुत ही उम्दा प्लेसमेंट है। बैकवर्ड टारगेट की दिशा से सीमा रेखा के बाहर 4 रन। दोनों खिलाड़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित किया था, लेकिन गेंद दोनों को चकमा देती हुई सीमा रेखा के बाहर।
बबलू के बल्ले से पहली गेंद खेली है इस पारी की और पहली गेंद पर चौका जड़ा है।
देखना हुआ किस अंदाज में इस पार्क मिंडा के बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं। पवन 9 पे बल्लेबाजी करे, टीम के कप्तान बबलू 18 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां से अपनी पारी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। रुकावटें समाप्त हो चुकी हैं और दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए वापस मैदान पर जाते हुए। बबलू ने अभी तक 18 बनाए हैं, 12 गेंदें खेली हैं। पवन 9 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम के कप्तान इस पार्क मिंडा के डैक्स को चेज करने उतरेगी। देखना हुआ जब ये मुकाबला अब 16 ओवर का है तो कितना बड़ा टारगेट रहता है सामने। फिर भी कोशिश रहेगी इस पार्क मिंडा की कि कम से कम 140 150 के करीब पहुंचे। यहां अगर इतना स्कोर करने में कामयाब रहेंगे तो एक अच्छा टोटल रहेगा। कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी की शुरुआत करने की तैयारी चल रही है। तेज गेंदबाजी आक्रमण बहुत ही अच्छा नजर आया, पैनापन नजर आया है। काफी कंट्रोल अनुशासन के साथ गेंदबाजी की शुरू के ओवर्स में बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाया था, ज्यादा रन नहीं लुटाए पर उसके बाद कुछ अच्छे स्ट्रोक भी देखने को मिले इस पार्क मिंडा के बल्लेबाजों के द्वारा। और अब स्थिति यह है कि 8 ओवर के बाद 61 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बारिश थोड़ी देर के लिए आई थी लेकिन अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। जगदीश बॉलिंग करने के लिए आए हैं। 9 ओवर की शुरुआत करेंगे 29 नंबर की जर्सी में। और जो फील्ड प्लेसमेंट नजर आ रहा है, विकेट कीपर के अलावा गली नजर आ रही है, पॉइंट है, टी पे खिलाड़ी मौजूद है कवर बाउंड्री लाइन पर। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ साइड में, ऑन साइड में, डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन और एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग 30 के दायरे के ऊपर नजर आ रहा है। कप्तान पवन सामना करेंगे 9 के निजी स्कोर पर और इधर जगदीश तैयार है। और नेवर की पहली गेंद फुल टॉस गेंद की है, गैप पे खेला गया स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पे जाती हुई और ये 4 रन। पहली गेंद पर फुल टॉस गेंद कर बैठे जगदीश, उसका पूरा फायदा उठाया पवन ने और चौके में तब्दील किया इस गेंद को। स्कोर 65 2 विकेट के नुकसान पे। 61 रन पे 2 विकेट जब स्कोर था तभी मैच रुका था बारिश के कारण। बारिश आई लेकिन इतनी तेज नहीं आई कि जहां से बहुत ज्यादा व्यवधान उत्पन्न हो। वापस मुकाबला शुरू हुआ और पहली गेंद पर चौका मारा है कप्तान पवन और उनके साथी बल्लेबाज की सोच होगी कि यहां से अब थोड़ा सा रन गति में और इजाफा किया जाए क्योंकि अब ओवर घटा दिए गए मात्र। अब ये मुकाबला 16 ओवर का है यानी कि 4 ओवर घटाए गए हैं। अगर दोनों टीमों के ओवर का को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के 8 ओवर यानी कि इतने समय का जो अवरोध था उसको मद्देनजर रखते हुए ये मुकाबला फिर से शुरू हुआ है। 65 2 विकेट के नुकसान पे पवन 13 पर पहुंच चुके हैं। शुरू में जरूर थोड़ा सा समय लिया था लेकिन अब अपने आप को सेट कर चुके हैं और फील्ड बहुत तेज है। खूबसूरत नजारा यहां से देखने को मिलता हुआ पीसीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मैदान पर। जगदीश नेगी बॉलिंग कर रहे हैं। ये अच्छी गेंद है, लेंथ बॉल पड़ने के बाद अंदर की ओर आई, क्रॉस द लाइन मारने का प्रयास जरूर किया था लेकिन फुटवर्क अच्छा नहीं था। 34 स्टंप की लाइन होती गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में गई है। डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक खिलाड़ी के लगा रखा है ताकि किसी भी संभावित कैच को पकड़ा जा सके। जगदीश ने पिछली गेंद पर अच्छी वापसी की, पहली गेंद पर बाउंड्री आई थी। ये अच्छी लेंथ है, अच्छा वेरिएशन करते हुए जगदीश लगातार एफर्ट डाल रहे हैं कि ये साझेदारी को तोड़ा जाए। और विकेट हाथ में रहती है तो आप जोखिम उठाने से कतराते नहीं है।
अब बबलू बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं, अभी तक 18 पे बल्लेबाजी की, 18 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से शॉट ऑफ गुड लेंथ फाइटिंग के बाद पैड लाइन पे आती हुई ऑन साइड में जब तक गेंद उठाया जाए सिंगल लेने में कामयाब। बबलू और पवन के बीच एक साझेदारी पनपती हुई। स्पार्क मिंडा के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। शुरू में काफी किफायती अनुशासित गेंदबाजी हुई तेज गति के गेंदबाजों के द्वारा। यह अच्छा शॉट है, ऑन दी अब खेला है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की दिशा में पवन के बल्ले से शॉट निकलता हुआ 6 रन का इशारा है। क्या शॉट खेला है, आसान नहीं होता। लेंथ को पिक किया था, लेंथ बॉल थी, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के सर के ऊपर से। यह बढ़िया शॉट है, आत्मविश्वास में इजाफा होगा। कप्तान पवन बल्लेबाजी कर रहे हैं और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है इनकी निगाहें पूरी तरह से जम चुकी है। यह अच्छी गेंद है, एक बार फिर से अच्छी स्लोअर वन का इस्तेमाल किया, गति परिवर्तन करते हुए बहुत ही अच्छा शॉट खेला था। इस ओवर में बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, इस तरह के स्ट्रोक कम ही देखने को मिलते हैं। अक्सर आप विराट कोहली को इस तरह के शॉट लगाते हुए देखते हैं। पवन 20 पे पहुंच चुके हैं 9 ओवर के बाद 73 2 विकेट के नुकसान पे। जगदीश नेगी का पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा जरूर साबित हुआ है, जिसमें एक बाउंड्री और एक सिक्स के साथ, सिंगल के साथ एक अच्छा ओवर घटा है। सोनू गेंदबाजी करने के लिए आए, उनकी पहली गेंद एक्शन के बाहर, वाइड का इशारा, शोल्डर गिरता हुआ। देखना होगा, ये पारी के 10 ओवर का खेल प्रगति पर है, 74 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बबलू के लिए गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पे विकेट मिली है। अच्छा शॉट, पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से 4 रन प्राप्त करते हुए शॉट ऑफ गुड लेंथ पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर उछाल देखने को मिला, लेकिन बबलू बहुत अच्छी लय में है, छोड़ने वाले नहीं है। रनों की रफ्तार बढ़ाने का प्रयास है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। और एक और चौका इस ओवर की दूसरी गेंद है, बल्कि बबलू बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले से ही उन्होंने अपने इरादे का इजहार किया है, 23 पर पहुंच चुके हैं और दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए अच्छा इंटेंट दिखाया। और इस बार फिर से खराब गेंद, बढ़िया निष्पादन, परिणाम 4 के रूप में। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, खराब गेंदबाजी, उसका पूरा फायदा उठाते हुए स्पार्क मिंडा के दोनों बल्लेबाज। बबलू जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 82 स्कोर हो चला है इस बाउंड्री के जरिए। बबलू 27 पर पहुंच चुके हैं 15 गेंदें के लिए, पर सोनू के लिए राह आसान नहीं है। इस ओवर में अभी तक 2 बाउंड्री लगा चुके हैं बल्लेबाज सोनू। एक बार फिर से शॉट ऑफ लेंथ, क्रैकिंग शॉट, कवर फाइट के बीच से 4 रन और बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी के स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। बबलू अपनी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया है। ऐसा लगता है कि डगआउट में इसी बात को लेकर मंथन चल रहा था कि आने वाले जो ओवर से अगर मैच वापस शुरू होता है तो आपको इस अंदाज में बल्लेबाजी करनी है। अब बबलू अपने रंग में नजर आ रहे हैं। चिंता का विषय है डैक्सको के कप्तान वैंग के लिए, उनके खिलाड़ियों के लिए। और ये अच्छी गेंद है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। शुरुआत अच्छी मिल चुकी है, मोमेंटम मिल चुका है, पर इस पारी को बड़ी पारी का रूप देना चाहेंगे और दोनों के पास ये क्षमता है, बड़े शॉट लगाने की सलाहियत रखते हैं, जैसा कि आपने देखा ही पूर्व में। ये ऊपर डाली हुई गेंद, बल्ले के बिल्कुल बॉटम पे गेंद लगी है, लेकिन फिर भी 1 रन लेने का मौका है बल्लेबाज बबलू के पास। बबलू और पवन के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई 1-1 2 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 87 2 विकेट के नुकसान पे। काफी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। विकेट का पतन हुआ था, लेकिन उसके बाद कप्तान ने कप्तानी पारी खेली है अभी तक। ये शॉट है, ये गोली की रफ्तार से है, ये आकर्षक है, बहुत ही बढ़िया आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। कवर बाउंड्री के बाहर दंदनाता हुआ चौका। 10 ओवर के बाद 91 2 विकेट के नुकसान पे
बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया है, चले हो मंजिल को पाने। और अभी तक का देखा जाए तो पारी के 10 ओवर का खेल समाप्त तो है 91 विकेट के नुकसान पे। अगले दो नहीं कर लो, आओ 2 ओवर कर लो, 2 ओवर फिर करेंगे। अगले 2 ओवर के लिए एक बार फिर से माइक्रोफोन पर मयूर, स्वागत है आपका। Thank you, Anwar. (91 for 2) for Spark Minda. The match has been reduced to 16 overs a squad due to the rain delay. Pawan 24 not out of 19. Bablu on 32 not out of 18. On the leg side, that will definitely be a wide. 1 run added to the total. 92 for 2 for Spark Minda. And just 10 overs been bowled, but the scoring has been huge. 92 for 2. They are going at a very, very good run rate. And especially by Bablu, 32 not out of 18. And this has been a very, very good partnership from both of them. Very well defended, right on the front foot. It's right on the money from the bowler, Ashwini Chaudhary. 1 for 16, his bowling figures in 14 deliveries. And that's what his captain would be looking for, to bowl right on the money on the channel of off and middle. We've seen in the past bowlers being rewarded. Very, very short outside off stump. It cuts very well. Probably got distracted with the grass right in front of him. That's why he couldn't spot the ball immediately. But thankfully, the ball didn't go on to the boundary because it was hit ferociously off the back foot. But we'll just get a run. 93 for 2. And cannot afford to bowl so short that ample time has been given to the batsman. After back foot again, too much wheat on offer from Ashwini Chaudhary, but he was lucky enough that he escaped without hurting himself, with no runs on this ball being written. It was again short, same line and length, trying to be on the back foot, but just outside edge of the bat. Probably the bat got deflected in his hand. Very short again, was on the back foot immediately as soon as he saw that ball being shot towards the man at the square leg. No runs again. Dot ball. The score remains on 93 for 2 in 10.4 overs. 2 more deliveries to go from Ashwini Chaudhary. Been just a quiet over as of now. Just 2 runs being scored off this over. Wide outside off stump. Was trying to flash the delivery. Was very, very wide out of his arc. And thankfully, he didn't hit any edge. There is protection at third man. And the fine leg has been called up. So anything straying down the leg side could very well easily go towards the fine leg boundary. Outside off stump again, he's flash batted it like a racket in his hand, but towards the man at a long on, and that will bring the end of the over. So 11 overs have been bowled. Spark Minda are 93 for 2 versus Daxko. Ashwini Chaudhary 3 overs, 1 for 18. 94 for 2 for Spark Minda. This is the second match of the day on this Sunday gloomy afternoon. The Dafa News Pro Corporate League. Taking this opportunity to thank our sponsors again. Title sponsor Dafa News, IFCO, KEI Wires and Cables. You have Max Protein,
our energy bar partner, and VJone, our grooming partner, to make our cricketers look stylish and handsome. And not to forget our principal sponsor, SG, the legend in the cricket balls and other accessories. They have been manufacturing great products over the years for the cricketers and everyone in the community to cater to. So anyone at the dugout there can just head on to the counters to check on the product. 94 for 2, back to business. 11 overs have been bowled. Just 5 more overs to be bowled now. Remember, it's a 16 overs contest because of the rain delay and not 20. बॉलर कौन है? Jagdish have been given the ball to try and take our wicket. Taken on the field, couldn't connect well. Will get a single, rotates the strike. 95 for 2. Mid on fielder at deep, long off will field the ball. Bablu 33 not out of 34, not out of 21. 126 not out of 25. The run rate still has been very good thanks to the opening partnerships, actually to the second wicket partnerships just before the rain started. It's H! He makes the wicket keeper and on to the boundary towards the Dafa news hoardings for 4 runs. It went flying thick and fast. Not much that the wicket keeper could have done. Probably if there was a slip also, that would have been evaded both between the fielder and the wicket keeper and on to the boundary. So the score moves on to 99 for 2 for Spark Minda. He was really not to the pitch of the delivery, just kept on swinging it towards the cover. But thankfully, and you say, if you slash it hard, and that exactly that he did, and he was rewarded with 4 runs. So 37 not out of 21 deliveries is Bablu now. Pawan at the other end played a sheet anchor role of 26 not out of 24. Probably consumed a lot more deliveries than expected, but the partnership is that what definitely matters now for the team, and both have been doing very, very brilliantly. Very wide out stump, true extra cover. It was in the air, but the fielder will manage to cut it off, and 100 runs on the board now for Spark Minda. 100 for 2 in 69 deliveries. This is a good run of play for Spark Minda. It's in the air. It is very well, and because it's it off well enough, half a dozen here for Bablu. Moves on to 44 with this stroke. This was magnificent hitting here. And 106 for 2 now for Spark Minda. As soon as he saw the... I beg your pardon, it was from Pawan. Very good shot. Moves on to 32. And that was really onto his zone. I'm sure his eyes must have popped up when he saw that. And into the boundary for 6. Very, very short. Didn't bounce off enough. But will definitely get a single. That's a misfield. The ball is rolling away to the boundary. And for 4 runs. Probably didn't see the ball until the last moment. And ensures his team with 4 extra runs. I would have to say extra because probably 3 extra. There's eventually setting off for just 1 run, but it eventually became 1 plus 3, 4 runs onto the boundary. 1-1-0 for 2 now for Spark Minda. Very, very short. That will be a wide actually. And that's 1. Everyone on the board. 1-1-1 for 2. Reminds me of the late David Shepherd. He used to put his one leg up for a moment till the score didn't pass on to 1-1-2. So tributes to the late David Shepherd. 1-1-1 for 2. Spark Minda.
Very short again, but it was not right to the pitch of the delivery. Really, it's very, very important that you play to the delivery. He did see the ball was shot all right, but he didn't jump to conclusion to put the ball where it was meant to be. And that will bring the end of the over. 12 overs have been bowled. Spark Minda are now 1-1-1 for 2. This was an expensive spell of bowling from Jagdish Negi. 12 runs every over. 3 overs, none for 36. And we'll have a change in voice. It will be from English to Hindi. We'll have the poetry in motion again from our very own Anwar Siddiqui. Over to you, Anwar. शुक्रिया मयूर। 111 2 विकेट के नुकसान पे बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने। हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, हजार जेर कदम हो रास्ता खारों का, जो चल पड़े तो फिर इरादा नहीं बदलते हम। 12 ओवर के बाद 111 2 विकेट के नुकसान पे पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर। गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास, अंपायर ने अपने बाजू को हवा में फैलाया। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर भी बदला है। 113 2 विकेट के नुकसान पे अभी पहली पारी का खेल चल रहा है, दूसरी पारी का खिलाना शेष है। 12 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और गेंदबाजी पंकज बिस्ट कर रहे हैं और यह अच्छा शॉट है। कोई मौका नहीं, घुटनों के बल गए और सामने वाले गेंदबाज को घुटने के बल लाने पर मजबूर किया है। बहुत ही अच्छा शॉट खेला है। पवन कप्तानी पारी खेल रहे हैं, यादगार पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। शुरू में खामोश नजर आ रहे थे तो ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि क्या इनकी खामोशी कितनी देर तक रहेगी, लेकिन उन्हें पता है खामोशी भी बहुत कुछ बयां करती है। वो खामोशी से सब कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे। एक बार फिर से ऊपर डाली गेंद, अच्छा शॉट खेल रहे हैं और पवन पूरी तरह से अब लय प्राप्त कर चुके हैं। 40 पर पहुंच चुके हैं, 41 पर सिंगल के साथ। बबलू 38 पर। दोनों के बीच एक बढ़िया साझेदारी होती हुई ये पारी के 13वें ओवर का खेल चला। 118 रन बोर्ड पे हैं। जो अनुमान हम लगा रहे थे 16 ओवर के मुकाबले में 150 160 का, वहां तक पहुंचता हुआ इसको नजर आ रहा है। यह शॉट है, पावरफुल शॉट है और गेंद जाएगी भी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी, लगातार ताबड़तोड़ रन बटोरते हुए दोनों बल्लेबाज। आज इरादा बनाया है दोनों बल्लेबाजों ने। बबलू और पवन के बीच हो रहे आगे निकलने की। कभी बबलू आगे निकल रहे हैं तो कभी पवन आगे निकल रहे हैं और इन दोनों के चक्कर में डैक्सको के गेंदबाजों का जो बॉलिंग विश्लेषण है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। 122 2 विकेट के नुकसान पे। ये अच्छा शॉट है, कवर ड्राइव करने का प्रयास और इस बार चूंकि विकेट कीपर ने स्टंप जो बिखेरे थे पर क्रीज में सुरक्षित है बल्लेबाज बबलू। पंकज बिष्ट क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे दोनों बल्लेबाजों पर, कैसे लगाम लगाएंगे। जबीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल का फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। पंकज की गेंद और ये शॉट है। ये गेंदबाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल नहीं रहे, खिलवाड़ कर रहे हैं और एक बार फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। प्यार की जिद न करो, प्यार बहुत महंगा है और इश्क का इजहार किया है दोनों बल्लेबाजों ने। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आदमी को चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, इश्क के बदले में भी त्वार होना चाहिए। ताबड़तोड़ रन निकल रहे हैं दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से, रनों की प्रवाह बह रही है।
आग उगल रहा है इनका बल्ला, और ये शॉट है, ये अद्भुत है, ये नजाकत अदाकारी के साथ खेला है। आते हैं आने तो ये क्या ले जाएंगे, जब मैं डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे, और जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर कब देखना फिजूल है आसमान का। शानदार बल्लेबाजी, 130 विकेट के नुकसान पे 13 ओवर समाप्त हुआ है। 13 ओवर के बाद 130 विकेट के नुकसान पे पवन और बबलू। पवन अपने नाम के साथ हवा से बातें कर रहे हैं, गेंदबाज सोच रहे हैं, डैक्सको के कप्तान मयंक के चेहरे पे सिकन आ चुकी है, अपने खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी की है, चारों दिशाओं में रन बटोरे हैं दोनों बल्लेबाजों ने। ऐसा है, मैं नहीं कह सकता कि एक ही दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं। अगर आप देखिए स्क्वायर ऑफ द विकेट, हर दिशा में रन बटोरे हैं, और ये बल्लेबाजी वेगनवील इनकी बल्लेबाजी को दर्शाता है कि कितने परिपक्व, कितने मेच्योर बल्लेबाज हैं। इनके पास हर तरह के शॉट है, हर गेंद के लिए इनके पास हथियार है जिसका वो इस्तेमाल करते नजर आए इस पारी में। 18 गेंदें शेष है, और अब यहां पर साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि 160 170 के आसपास स्कोर खड़ा होने में कोई परेशानी नहीं होगी। पवन अपने अर्धशतक को पूरा, बबलू अपने अर्धशतक को पूरा कर चुके हैं, 50 रन बना चुके हैं महज 26 गेंदे के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अर्धशतक पूरा किया है, और ये नेवर की पहली गेंद, विकेट। कप्तान पवन पवेलियन जाएंगे, ऑफ स्टंप के बाहर निकलती गेंद को कट करने का प्रयास किया था, बल्ले का सिरा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में समाई है, और ये साझेदारी पर अंत में विराम लग ही गया है। 130 विकेट के नुकसान पे पवन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 41 रन बनाए आउट होने से पहले, 31 गेंदों का सामना किया, और प्रीत ने बल्कि उन्हें पवेलियन भेजा है। ये साझेदारी को तोड़ना बहुत जरूरी था, और अंत में पवन आउट होकर मैदान के बाहर जा रहे हैं, लेकिन पवन ने आउट होने से पहले जो शॉट लगाए हैं, अगर आप उसकी हाईलाइट देखेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की इन्होंने। आप कई बार आप बहुत बड़ी पारी नहीं खेलते, लेकिन कुछ ऐसी पारियां रहती है जो हमेशा जहन में रहती है, कुछ ऐसे शॉट होते हैं जिसे आप कई बार देखेंगे। कौन सा बिन? ठीक है, ओके। जीतविन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ये हिंदी और इंग्लिश का समावेश है इनके नाम में। है 130 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जीतविन नए बल्लेबाज, और प्रीत को सफलता मिली है, फील्डिंग से संतुष्ट नहीं है, उसे ठीक कर रहे हैं, दाएं बाएं कर रहे हैं खिलाड़ियों को। और ये शॉट ऑफ गेंद, पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकली। बल्लेबाज जीतविन ने ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, जल्दी खेल बैठे थे, और गेंद बॉल पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकली। प्रीत की गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद अंदर की ओर आ रही थी, बैकफुट पे जाकर गेंद को स्टीयर किया, गली की दिशा में गेंद को फील्ड किया जाए, 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज जीतविन के पास। जीतविन सिंह, बबलू ने 50 रन अपने पूरे किए, अर्धशतक जड़ा है इस मुकाबले में, बहुमूल्य पारी खेली है। एक और अच्छा शॉट है, ओपन द फेस, डीप पॉइंट बाउंड्री से गेंद को फील्ड करेंगे। आत्मविश्वास से लवरेज नजर आ रहे हैं, बैकफुट पे जाकर स्पिनर के खिलाफ इस तरह के स्ट्रोक खेलना आसान नहीं होता, पर जब आप अच्छी लय में होते, गेंद आपको फुटबॉल की मानी नजर आती है, आपका पांव अच्छा चलता है, फुटवर्क अच्छा रहता है, तो आप अच्छी गेंदों पर भी शॉट लगाने में कामयाब होते हैं। ये तो ताकत के भरोसे मारने का प्रयास था, और बॉल की रफ्तार के साथ गेंद में उछाल उतना नहीं था, बॉल पड़ने के बाद नीचे रही, ऑफ स्टंप के बाहर। किस्मत वाले हैं, गेंद मिडिल स्टंप पे नहीं थी, क्रॉस द लाइन मारने का प्रयास, बीट हुए। इस बार गेंद को कट किया, गैप में है, मिलेंगे 4 रन, तेज आउटफील्ड, ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी हिट, बैकफुट पे गए, सारा वजन पिछले पांव पे लिया, कट कर दिया गेंद को, स्क्वायर थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ ही
14 ओवर के बाद 136 3 विकेट के नुकसान पे स्पार्क मिंडा आने वाली 12 गेंदें शेष है। कितने रन और बनाएंगे दोनों बल्लेबाज। बबलू क्रीज में मौजूद है। 27 गेंदों से 51 रन की ताबड़तोड़ पारी, अर्धशतक और साथ में जीतविन सिंह 5 रन बनाकर क्रीज में मौजूद है। अगले 2 ओवर में क्या कुछ होगा, एक बार फिर से माइक्रोफोन पर मयूर स्वागत है एक बार फिर से। पेज का एंगल 136 for 3. Beg your pardon. Spark Minda. Bablu has just completed his half century. 51 not out of just 27 deliveries. Jitwin Singh has come to the crease in the last over. 5 not out of 4. Very wide outside off stump, and what a shot to complete the boundary. Square of the wicket, and so much room outside off stump. We have been saying this time and again that anything outside off stump, and it was like a slap to the ball, and it went to the boundary in no time. 140 for 3. Very well played. Bablu is definitely seeing the ball like a football now. 56 not out of 29. Ashwini Chaudhary is 1 for 23. Touch expensive. And now Jitwin will have the strike. 5 not out of 4. Fuller ball was going little back to the ball and was trying to slash it through the covers. Probably was trying to play the inside out shot and couldn't connect it. From a distance, he actually looks like Zimbabwe's Sikandar Raza with his red cap on. Sikandar Raza, mind you, is a destructive batsman, and so many times, probably 70 to 80% of the recent wins of Zimbabwe has been anchored to win by Raza himself. Very well pulled and equally well played. It was swing outside off stump. I'm sure he was not thinking that the ball will go to that direction, but he's angled it so well. Jitwin Singh goes on to 9 not out of 6. And he pierced the gap so very well. And probably a little bit of surprise on the face of Ashwini Chaudhary. And did swing, but didn't swing enough outside off stump. But what a shot that was. Score will now move to 145 for 3 in 14.4 overs. Very short. Just a flush of the air. Will be a wide and 1 run also. So 2 runs will be added to the total. He was trying to swing it, but probably the air got revolutionized with that. 147 for 3. Mind you, 16 overs contest. So just 8 more deliveries to go. 2 more in this over and then 1 more coming up. 147 for 3. Very well played. Connected well. It's in the air. Fielder underneath it. Takes it beautifully. 4th wicket down here. And Bablu out mein, and well said, Bablu has to go back to the pavilion after scoring a very nice 56 of 31 deliveries. And towards the end overs, the slog end overs, he was trying to play definitely for his team, but you can hear the cheers and the clap as he approaches the dugout. He'll be welcomed for his great innings of 56 and a very good contender for the man of the match also. Not every day that you see so well crafted half century, and this is one of them.
And I'm sure if there were overs in hand, he might not have try and hit that shot because he saw that the fielder was strategically placed for that shot itself, and he played right onto him. So 147 for 4 for Spark Minda, with one legitimate delivery remaining in this 15th over, with one more over to go, being a 16 overs contest due to the rain delay. New batsman. New batsman. अरे कैच किसने करी थी फिर? So Jitender is the new batsman. He'll be facing one ball of this over. On the leg side, gives the room himself. Delby fielder did very, very well. Gets off the mark immediately and keeps the strike. 15 overs have been bowled. Spark Minda are 148 for 4. 148. 148. कभी सुरेंद्र कभी जितेंद्र पुष्पेंद्र. अब है कौन? One more over to go. So just 6 balls remaining. But they have racked up a very good score. Probably they might just feel probably at this juncture it must have been around probably in 10 runs, 10, 15 runs more given the way they started off the innings. But we'll have to wait and watch what happens in the 6 deliveries. Last over to be bowled. Here is the one. Flights the ball, ages, but the one bounce towards the man at gully will just be a single, and 150 runs is up. No, one more run more remaining, 149 actually, 149 for 4. Very, very short. He takes the aerial route. Will it be a 6? Yes, it is. This time it is 150 up for Spark Minda. 155 for 4. Very good shot. Was in the air for a long, long time. Probably the catcher had deep long on. For one moment, he did think that there was a chance, but it went over his head and onto the boundary for half a dozen. 155 for 4. With 4 more deliveries to be bowled from Shumit Bist. 15 runs he has conceded of his 8 deliveries. Chitwin Singh 15 not out of 7. He will try and use the long handle as more as possible. Just 4 more deliveries to go in this innings. It's in the air again. Probably just fall between the fielder and one bounce onto the rope for straight boundary for 4 runs. Using the long handle very well here. Jitwing Sikandar Raza Singh, 19 not out of 8, is losing its confidence with the previous 6, and this ball could have easily cleared. Just one bounce near the ropes and onto the boundary. So if you don't bowl according to lines, the last 3 deliveries might just fetch equal results. So be very mindful. Very, very short again. Square bats it. But there is protection. The call is for 2. It could be a risky one, but the throw was not in time. And 2 runs will be taken. Could have risked the 3rd one, but they will eventually settle down for 2 runs. 161 for 4. 2 more deliveries remaining in this over from Sumit Bist, the last over of this innings. Probably the throw was expected to come long and fast, but probably got a little slower off the block and eventually helped both the batsmen to come back for 2 runs. Going to middle it, will just be a single. There is protection. The ball didn't bounce as much as he was anticipating, and resultant become little shorter. Was in the air all right. So the last ball of the innings here coming up.
Connects it well and collects it very, very well onto the paddy fields out of the ground for a humongous 6 runs to end this over. And the innings also 168 for 4. The target for Daxko will be 169 of 96 deliveries. What a shot to finish this innings here. Lovely, lovely connection from Puspender Balian. And as soon as he saw the ball being flighted up to him, he gave room into himself and onto the paddy fields next to the ground for half a dozen. 168 for 4. Didn't lose too many wickets. And just 16 overs. I did say. And he's a good contender for the Vision Super 6. And I'm sure this 6 will rack up among the top one of those. We have yet to see what the second innings unfolds, but I'm sure this will be pretty right there up for one of those pretty huge 6. Not easy to clear the boundary and to deposit the ball onto the next ground. So the scorecard will look very thick and fast, will look thinner and will look thicker and thicker with rounds being accumulated. 169 is the target for Daxko. We'll be back with a live action very, very soon. हमको 20 का कराना
कि बड़ा लक्ष्य और बड़ी तैयारी के साथ डैक्सको के ये दोनों बल्लेबाज पारी का आगाज कर रहे हैं। एक मजबूत ठोस शुरुआत देते हुए, जानते हैं कि फाउंडेशन जितनी मजबूत रहेगी, इमारत खड़ी करनी उतनी आसान होगी। आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक अच्छा मंच तैयार करेंगे और इस तरह के लक्ष्य का पीछा करते हुए आपको शुरुआत अच्छी चाहिए ही चाहिए, और उसकी शुरुआत बेहद शानदार ढंग से की है। खासतौर से प्रीत ने पहले 2 बाउंड्रियां, फिर उसके बाद आखिरी गेंद पर छक्के से ओवर को समाप्त किया है। 16 रन बटोरे पहले ओवर में। जीतविन का ओवर महंगा साबित हुआ है। प्रेशर गेंदबाज के ऊपर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जब पहली ओवर से ताबड़तोड़ शुरुआत बल्लेबाज के द्वारा कर दी जाए तो अन्य गेंदबाजों के ऊपर भी उसका प्रेशर होता है, और ऐसे में संभल कर गेंदबाजी करना चाहते हैं। गेंदबाज सामने है बल्लेबाज सोनू। नेवर की शुरुआत स्लोअर 1 गेंद के साथ, और सोनू अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्ट्राइक ज्यादातर प्रीत को दे रहे हैं, क्योंकि प्रीत अच्छी लय में है और पावर प्ले में जिस अंदाज में बल्लेबाजी की जरूरत है वो कर रहे हैं। हालांकि ऑफ साइड में प्रोटेक्शन काफी ज्यादा है, उसके बावजूद रन बटोरने में कामयाब हुए हैं। यॉर्कशॉट के बाहर निकलती हुई गेंद पर बल्ला चलाया है। जब तक दायरे के ऊपर गेंद को फील्ड किया जाए, 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज प्रीत बलियान के पास। प्रीत बलियान पहुंच चुके हैं 6 गेंदों से 16 पर, जिसमें 2 चौके 1 छक्का शामिल। सोनू लगातार स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। स्ट्राइक रोटेशन की जिनकी कोशिश है वो कामयाब होती दिखाई दे रही है। 19 बिना किसी नुकसान के पारी के दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। प्रीत से कुछ बातचीत की है अंपायर निश्चल ने। प्रीत बालियान ये शॉट गेंद है, कड़क शॉट है, पावर भी है, और ये दिखाया है मैक्स प्रोटीन की पावर है। 4 रन में विकेट सीमा रेखा के बाहर, 23 बिना किसी नुकसान के। शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, पोजीशन में आए, और इस तरह की ढीली कमजोर गेंदें मिलेगी तो इसी तरह की मार पड़ेगी। गेंदबाजी अभी तक उस लेन पर उस तरीके की नहीं हुई है। एक बार फिर से अच्छा शॉट है, खिलाड़ी धाराशाही, गेंद बाउंड्री के बाहर। परिणाम 4 रन। दिशाएं बदली है लेकिन दशा नहीं बदली। परिणाम एक बार फिर से चौके के लिए 27 रन। प्रीत को रोकना मुश्किल नजर आया अभी तक गेंदबाजों के लिए, और पहेली बने हुए हैं। गेंदबाज के साथ क्षेत्ररक्षकों को भी सजग रहने के लिए बाध्य किया है, सतर्क रहने के लिए। चारों दिशाओं में रन इनके बल्ले से आ रहे हैं। अगर आप देखें, पहली बाउंड्री मिड ऑन, दूसरा कवर, और उसके बाद मिड विकेट के ऊपर से छक्का, और एक और चौका गेंद मिड विकेट की दिशा में, इस बार पॉइंट की दिशा में। लेकिन रन की रफ्तार कम नहीं होने दी है, रनों की रफ्तार को बढ़ाया है। और जब पारी का आगाज हो रहा था तो 10.56 रन प्रति ओवर की रन औसत से रन बनाने की जरूरत थी। जरूरत के हिसाब से अभी तक अपने आप को, बल्कि उससे आगे ही अपने आप को लेके चला है। हाँ, ये बना चुके हैं, बस थोड़ा सा 27 रन पवन कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाजी में तो इन्होंने 41 रन की पारी खेली, लेकिन अब चेज कर रही है जब डैक्सको की टीम। ऐसे में पवन के ऊपर भी प्रेशर है बतौर कप्तान गेंदबाजी करते हुए। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 28 डैक्सको का स्कोर। प्रीत बालियान 25 और सोनू चौहान 3 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बतौर ओपनर दोनों ही बल्लेबाज क्रीज में मौजूद हैं। डैक्सको के कप्तान मयंक इस वक्त डगआउट में अपने खिलाड़ियों के साथ मौजूद है, तो प्रीत की बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे हैं। धीरे धीरे शाम का समय बढ़ रहा है। आज सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे, और अभी से कुछ मिनट पूर्व वर्षा के कारण मैच थोड़ी देरी के लिए रोका गया था। उसके बाद बारिश रुकी, कवर हटाए गए और मुकाबले को
रिड्यूस किया गया, 16 ओवर का किया गया और 16 ओवर के बाद स्पार्क मिंडा ने 168 रन बोर्ड पे टांगे हैं। शानदार बल्लेबाजी की बबलू ने अर्धशतक जड़ा। पुष्पेंद्र गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बॉलिंग में परिवर्तन हुआ है। 2 ओवर के बाद 28 रन आए हैं। 14 की रन औसत से अभी तक दोनों बल्लेबाजों ने रन बटोरे हैं। प्रीत बालियान 9 गेंदों से 25 अपनी क्वार्टर सेंचुरी इन्होंने पूरी की है। क्रीज में मौजूद हैं। और ये लीडिंग एज जल्दी खेल बैठे थे, बल्ले का मुंह जल्दी बंद हो गया। किस्मत वाले हैं कि नजदीक में कोई खिलाड़ी नहीं था और इसी के साथ ही अपना छोर बदला है। पुष्पेंद्र बालियान और प्रीत बालियान के बीच यह शॉट अच्छा है, ऑफ स्टंप पे डाली हुई गेंद, लेकिन संपर्क इतना अच्छा था, साउंड इतना अच्छा, मैक्सिमम के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। पैंतीस बिना किसी नुकसान के। सोनू चौहान के बल्ले से इस बार ये शॉट देखने को मिला है और सोनू ने भी कहा कि हम कहां पीछे रहने वाले। जब सामने वाला साथी अच्छा कर रहा हो तो अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है और बहुत कुछ सीखा है उनके साथ में। 35 रन की भागीदारी, पहले विकेट की साझेदारी में दोनों बल्लेबाजों के मध्य। पुष्पेंद्र की गेंद, एक और बार गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर। सूरज के इर्द गिर्द भटकने से फायदा, दरिया हुआ है गुम तो समंदर तलाश कर। उसी की तलाश में ये दोनों बल्लेबाज एक ख्वाब लेकर मैदान पे उतरे हैं। पारी का आगाज कर रहे हैं। 39 रन की भागीदारी पहले विकेट की साझेदारी में डैक्सको के लिए इन दोनों ने अब तक बनाई है। ये अच्छी गेंद है। इस बार गति परिवर्तन भी किया था, लेंथ अच्छी रखी, थोड़ा सा लेंथ को आगे खींचा, धीमी रफ्तार से गेंद को छोड़ा था। सावधानी बरतते हुए गेंद को खेला मिड ऑफ की दिशा में। जब तक गेंद को उठाया जाए, सिंगल के साथ अपना छोर बदला। 40 बिना किसी नुकसान के उम्दा शुरुआत दी है दोनों ही आरंभिक बल्लेबाजों ने। और इसी के साथ ही एक और बार सीमा रेखा के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर हाथ चलाने की आजादी मिली है और गेंद सीमा रेखा के बाहर। प्रीत के साथ सोनू चौहान का आज बर्थडे है, बर्थडे बॉय है और कहते हैं आज इनके जन्मदिवस को सेलिब्रेट करते हुए ये तो एक रस्म जहां है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहां सालगिरह होती है। सोनू चौहान अपनी सालगिरह के दिन आज अपनी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। 14 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और डगआउट में उनके खेमे में काफी खुशी का माहौल। और ये लेग स्टंप में फिर से ग्लांस किया है, पर शॉट पहले के खिलाड़ी के द्वारा अच्छी फील्डिंग थ्रो किया है और तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने रन चुराया है। तालमेल अच्छा है, रनिंग बिटवीन द विकेट कमाल की। 3 ओवर के बाद 48 बिना किसी नुकसान के। इससे अच्छा जवाब क्या दे सकते हैं। बतौर ओपनर आप पारी का आगाज कर रहे हो और 3 ओवर में महज 48 रन बटोर डाले हो। प्रीत बालियान 34, 12 गेंदे, सोनू चौहान 14, 6 गेंदे। दोनों की स्ट्राइक रेट पे अगर आप नजर डालें तो यही तो अंदाज है T20 का, फटाफट अंदाज में इन दोनों ने रन बटोरे हैं। अगले 3 ओवर में क्या कुछ होगा, माइक्रोफोन पर एक बार फिर से इंग्लिश कमेंटेटर मयूर, स्वागत है आपका। 48 इसमें दिख रहा है करेगा चेंज अगर हमने कर दी 40 तुमने बोले थे 3.4 में भैया। गड़बड़ हो गया क्या? चलो थोड़ा ये बता दीजिए। हुआ चेंज आप अभी कुछ नहीं है। 48 से टारगेट कितना था? टारगेट कितना था? टारगेट 169 का 10.56 रन पर ओवर पूरा चेंज हो गया।
43 टोटल स्कोर बता दो ना। क्या कहता कुछ मेरे से तो स्कोर को जब बताना 169 is the target. And what a brilliant start here for Daxko. 45 थोड़ा सा कम है। हाँ? कितना स्कोर कितना है? अभी ना बताओ स्कोर चलने दो। 45 We'll come back with the score very soon. ये बता 45 कैसे होगा 49 हो जाएगा ना फिर 44 40 थे दो चौके Off the में back 48 foot, ही तो हो गए एक then चौके defensively towards the man at एक चौका और एक सिंगल long on. But what a great opening partnership this is for Daxko. Very, very important that you have a stable partnership right in the middle when you are chasing a huge target, especially when it's just 16 overs due to rain delay. And Preet Balian, 34 not out of just 12 deliveries. Sonu Chauhan, 14 not out of 6. Have cemented their foot very strongly on the ground now. And Boris Galoria for the captain of Spark Minda. But just a couple of wickets and things might just change very, very soon. But the equation, as of now, it's in the favor of Daxko. Still a long way to go. It's more than 100 runs. And I'm sure some part of the match will be played under floodlights because we are approaching the evening, the late evening very, very soon. It's in the air, connected very, very well. Into the 50s is now Daxko. इसका टारगेट कितना? अभी बोल सकता हूँ? हाँ 169 का नहीं टारगेट नहीं टारगेट नहीं, अभी स्कोर बता सकता अभी हाँ हाँ नहीं दो का फर्क है क्या स्कोर है फाइनल अभी We'll come back with the score. But what a good clean hitting that was. Towards straight long on for a humongous 6. ये घूम भी तो नहीं है, पता भी नहीं चला बैट्समैन कौन है। We'll come back with the score and सोनू मार complete. सोनू चौहान मार रहा है ये सोनू चौहान है वो प्रीत है 16 नंबर की जर्सी में प्रीत है ये सोनू चौहान है लंबा वाला स्ट्राइक पे सोनू है That's it very, very well. He hits the fielder. And this time it will be 6 minus 2, 4 runs. 10 runs already from this over. Pressure immediately on the bowler. So very good stroke here from Sonu Chauhan. 1-6, then followed by a 4. He's seeing the ball very, very well, and it's important you see the ball till the last moment. And he hits the fielder at point. Plays it delicately towards the man at long on. Rotates the strike. Very good start here for the man in blue. Again, a very good shot. Well fielded. There will be no run. Anything short, anything onto their comfort zone, they have been able to dispatch the boundary to the maximum. And this is exactly why this partnership is becoming very strong with ball by ball. Taken on the full, was trying to use the long handle, a very quick run, and to rotate the strike. ये हेलमेट वाला वो है ना सोनू चौहान। Good single here from Preet Balian. And I'm sure the quick chat will be to give the single to the to the most established cricketer over there, because he's seeing the ball very, very well. 4 overs हो गया ना? And being over bowled, 4 overs have been bowled. We'll come back with the score very shortly. We have a small technical glitch over here. But there is no glitch between this partnership. What a strong partnership this has been. And head-scratching moments for Spark Minda. They've been trying to rotate the bowler, see what kind of experiment will help them to see the
figure go from 0 to 1, 1 to 2. Very important. Very, very well played. Could have been a wicket probably in the very first ball. He was anticipating that shot. But eventually just one run. It was hit little fast, but that's not very, very hard. I'm sure he would have seen the ball a bit late. Defensively played back to the bowler, but he couldn't connect it. And the player with the red cap, I'm sure while he was batting, I was mentioning him as Sikandar Raza. Very good shot, cuts it well. Couldn't connect with his foot too, and onto the boundary for 4. And runs are flowing thick and fast here for Daxko. Problems galore for Spark Minda. Anything they're hitting with the pad are turning into gold now. And this gold, the shine is going brighter and brighter. They need to make ensure Spark Minda that the spark doesn't come up very well. The score is now अभी तो आ गया ना 4 भी हो गया मतलब 4 ओवर फ्लैट का not been a very tough outing as of now for Ankur Dhankar. For Ankur Dhankar, none for 12. And 3 fielders just converging. Not only they need to drive the runs, they need to fill up the positions into their respective correct positions where probably they can see and mitigate at least the singles and the boundaries, because this rotation of strike also sometimes creates issues. And this is just the problem they need to negate from, not from the minds also, but from the physical play. Connects very, very well. The fielder is again just a spectator over his head for half a dozen. What a good clean strike this is from the batsman from Daxko. सोनू चौहान From Sonu Chauhan. They both are seeing the ball like a football, like a basketball, like a volleyball. And been very, very, very tough now. Every time they bowl, they're probably hearing their own heart beating. And the heart is beating very, very fast now for the bowler. As you can see themselves going for the cleaners. Ball being retrieved. But this is good clean strike. As soon as it is there on their arc, on their zone, they have been hitting it very, very disdainfully. On the leg side, couldn't connect it. He'll be very, very disappointed. Just hits it pad. Yes, you can see what one dot ball can make a difference. There are clappings all around, and you can see the floodlights have just been switched on. Taps it very softly. It will collect a single, but it gives a complete different dimension, complete different look and feel to the ground when the floodlights are on. And this is sometimes feels to be so nice. I've already said this looks like a English County Championship setting here with floodlights on now. As of now, this the English County Championship is definitely on back in England and Wales. Just hold on, batsmen will get back with the scores. You're having some technical difficulties. स्ट्राइक पे सोनू रहेगा, कौन रहेगा? सोनू है तो बताओ. हाँ, सोनू ही स्ट्राइक. स्कोर 70 रन 5 ओवर. 5 ओवर 70. अभी ओवर हो गया है नहीं, बॉलर नेम बताओ जो 5 ओवर हो गए. So
The score is 5 overs have been bowled. The score is 70 for no loss. भैया आशीष सर स्कोरिंग प्रॉब्लम थी, एक गलत चढ़ गया था। वो अपना आप हो रहा था, स्कोरिंग में टेक्निकल फॉल्ट है, 70 है। मैं बता देता हूँ कैसे, अगर कोई इशू है तो। तीन में 45 थे, स्कोरिंग में टेक्निकल फॉल्ट था, बता दो। ऑफलाइन स्कोरिंग भी चल रही है। We are getting back with the scores here. 3 में 45 से, चौथे ओवर में 12 रन आए और इस वाले ओवर में 13 रन आए, तो 25 ही रन आए। 45 और 25 70 ही तो हो गए। बता दिया इन्हें मैंने, बैट्समैन को कंफ्यूजन है तो बता रहा हूँ आपको। 82 मतलब कितना? You are saying it must be? It should be 82. नहीं यार, वो कर लेगा। चार्जर दियो बेटा, बंद हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो यार? चार्जर है कहाँ पे? अच्छा लग रहा है ना? हाँ? नहीं, थोड़ा सा उस समय गलत बोला था, उस समय भैया मयंक भाई वो थोड़ा सा। मेरी बात सुनो, वहां से हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बाउंड्री ज्यादा उसमें, आप ये भी स्कोर कर रहे हैं, वो भी स्कोर कर रहे हैं, वो भी स्कोर कर रहे हैं, तब भी आप स्कोर कर लेते हैं। एक बाउंड्री ज्यादा चढ़ गई सर। पहले तो आराम से सर कर रहे हैं, आराम से एक रन मैनुअली कर रहे हैं सर। आप लोग हम लोग भी बैठे, फोन मंगाया था उनसे, वहां से फोन मंगवाया था बाहर। आप स्कोरर के पास एक भेज दीजिए यहाँ पर। Come and you can sit along with us to tally the scores, please. One player from Daxko, please. गलती क्या हुई है एक्चुअली? गलती क्या हुआ? स्कोर 48 चढ़ गया था ना, 48। एक बाउंड्री ज्यादा चढ़ गई थी, वो कारण गलती से। चलवाएंगे तो अपना फोन ही मना कर दे, वो मेरे को दे दो, मैं कॉपी कर लेता है। वहां से स्कोरिंग मत कराओ भाई, मत करो यार, जानते हो यहाँ गलती मेरी आती है।
तो अभी स्कोर क्या है? अभी फाइनली 70. Very good shot. After a small interruption, there's been no interruption in the mind. On to the boundary for 4 runs. स्कोर अभी 74 76 है. This is a 6. 76 for no loss for Daxko. And they're chasing, they're going towards the target very easily, very peacefully as of now. What a good shot! This is a very good connection. But this time it's 6 minutes to 4 runs. And seeing the ball very well. 80 for no loss. Probably one of the most formidable partnerships that we have seen in this Dafa News Pro Corporate League. And what a strong partnership this has been. Very good shot. But will just get a single. Fielded very well from the player at that point. $81 for no loss now. Oh, it's in the air. Wicket keeper underneath it. It's in the fielder. Might be a collision. Oh, it just evades him. There were 3 fielders converging, including the bowler. That's what communication does. Probably someone should have said, it's mine. Probably, I don't know who said. But it evaded the fielder. Probably just touched his finger and onto the ground. So he survives for another day. He miscued the shot. It was high in the air. All the fielders came in one direction. They were for sure in collision course, but it was not safely pouched. Very good shot! This is utter disdain. This is a ripper of a shot. 6 runs. What clean strike this is. We are seeing batting of the highest order here at this Dafa News Pro Corporate League. What a way to start the proceedings, and what a way to continue it. Good, strong, clean hitting here. स्कोर कितना हो गया अभी? 88 for no loss. Slowly played towards the man at long on. Score moves on to 89 for no loss. And that will bring the end of the over. And we'll have the voice of Mr. Anwar Siddiqui now from English to Hindi. Anwar. शुक्रिया. 6 ओवर के बाद 89 रन और बिना किसी नुकसान के बर्थडे बॉय सोनू चौहान और प्रीत बालियान, क्या उम्दा बल्लेबाजी की है कि खुदा करे न ढले धूप तेरे चेहरे की, तमाम उम्र जिंदगी की शाम न हो. सोनू चौहान क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं. पुष्पेंद्र, और ये आते ही स्वागत किया इनका भी होगा. बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी, लगातार पानी की तरह रन बह रहे हैं. दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों दिशाओं में खिलाड़ियों को दौड़ाया है. चौके छक्के. सोनू चौहान से किनारा पाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रीत सामने है, और प्रीत से बचे तो सोनू चौहान है. किससे बचे? जिए तो जिए कैसे बिन आपके. चौका मारा है पहली गेंद पर पुष्पेंद्र के. सोनू चौहान 49 पे, और इसी के साथ ही होगा अर्धशतक. बर्थडे बॉय, और इसी के साथ ही हमने अर्धशतक पूरा किया है. 20 गेंदों पर 50 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली है. कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ही आसमां के अखबार की है. मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है. सोनू चौहान और प्रीत बालियान ने आग लगा रखी है मैदान पर. 97 बिना किसी नुकसान के.
और इस बार थोड़ा सा जल्दबाजी कर बैठे। और स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, सोनू चौहान 21 गेंदों से 53 5 जो कि 4 गगनचुंबी छक्के मारे हैं। रीजन मैक्सिमम 6 अवार्ड में अभी तक अपने आप को ऊपर लेकर के आए, और इस बार उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं। इस पहले के खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाएंगे सिंगल लेने का मौका है। 98 बिना किसी नुकसान के पारी के 7वें ओवर का खेल प्रगति पर है। और आज दिन के साथ शाम का वक्त आ ही गया है। दुधिया प्रकाश में जगमगाता हुआ ये खेल मैदान। और ये शॉट देखिए, ये कड़क भी है, धमाकेदार भी है, गजब भी है, अजब भी है, और इसी के साथ ही डैक्सको के 100 रन पूरे भी है। 102 बिना किसी नुकसान के। उन्हें यकीन है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। जबरदस्त बल्लेबाजी, 102 रन। प्रीत पहुंचे हैं 48 पर, 2 रन दूर है अपने अर्धशतक से, लेकिन ये प्रीत है, ये गेंदबाजों के दुश्मन है और अपने साथी के प्रीत है। 20 गेंदों पर अर्धशतक, क्या बल्लेबाजी की है 108 कि चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं सूरज हूं, फिर निकलूंगा। चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं सूरज हूं, निकलूंगा फिर से चलने के लिए। रास्ता कम है मेरे पांव के चलने के लिए, मंजिलें तुम ही करीब आ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव के चलने के लिए। प्रीत बालियान और सोनू चौहान ने क्या गजब की शुरुआत की है, और ऐसी शुरुआत ड्रीम शुरुआत कही जाएगी। और इनके ख्वाब वो पूरे होते नजर आ रहे हैं। और कहते कि ख्वाब औकात में रहकर नहीं देखे जाते, अपने रहमत के खजानों से अता कर मालिक सब कुछ अता कर दिया है। आज सोनू का बर्थडे सेलिब्रेट किस अंदाज में होगा, ये देखने वाली बात होगी। और पीसीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मैदान पर दुधिया प्रकाश भी इस बात का साक्षी बन रहा है कि डैक्सको की टीम इस वक्त ड्राइविंग सीट पर यह टीम लीड करती नजर आ रही है। अभी तक कितने स्कोर है? स्कोर बॉलर ने पूछा, गेंदबाजी में देखना होगा, गेंदबाज पूरी तरह से बिखरते नजर आए हैं। बॉलर करके चला दो, पहले इधर कर दो। बॉलर क्या बताया, कहाँ गया? पूछ लो। बॉलर नेम ओके, क्या नाम है? यश यादव। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, यश यादव गेंदबाजी ये करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। यश की गेंद, और पहली गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, गेंद जा रही है सोनू चौहान, और ये नो बॉल का इशारा, ये नो बॉल का इशारा है, जले पर नमक है, घाव पर घाव देते जा रहे हैं। और ये फ्री हिट, लाइसेंस टू किल, 110 बिना किसी नुकसान के। ड्रीम शुरुआत, एक मजबूत नींव रखी है दोनों आरंभिक बल्लेबाजों ने, दोनों ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। प्रीत बालियान ने इस प्रथा की शुरुआत की थी, उसको चलन में लाने का काम किया है बर्थडे बॉय सोनू चौहान ने। 110 रन बने अभी तक, और इस बार बल्ले का किनारा और भाग्य का सहारा, गेंद सीमा रेखा के बाहर। और कहते हैं कि जिसको तूफान से उलझने की आदत महजिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। जिस बहादुरी के साथ इस बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की है, किस्मत भी नतमस्तक नजर आ रही है, इनके घुटने पे बलाई है और इनके चरणों में नमस्कार करती नजर आई है। चौके पर चौका और स्कोर पहुंचा दिया 114 रन। लगातार रनों का अंबार और तूफानों की तरह इन्होंने बल्लेबाजी की है। नहीं हो रहा है, दिक्कत
एक बार फिर से बॉलर के बगल से गेंद को निकाला है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद जा रही है, सिंगल लेने का मौका है। लेकिन इस वक्त सोचने का विषय है, करे तो करे क्या, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने। हादसे भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। हौसला दिखाया है तो बल्लेबाजों ने दिखाया है। और इस बार विद द स्विंग गेंद को निकाल दिया है, गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और छक्के के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। शौक को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिलें कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता। सोनू चौहान और प्रीत बालियान ने कर दिखाने का प्रयास किया है, जिस जज्बे से बल्लेबाजी की है, गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने का इन्होंने भरसक प्रयत्न किया है और उसमें काफी हद तक सफलता भी पाई है। 121 बिना किसी नुकसान के, 121। और इस बार उससे भी अच्छा है, शॉट तो पहले भी खेला था इस खिलाड़ी ने, लेकिन इस बार उससे भी अच्छा और लगातार अच्छा शॉट खेल रहे हैं कि जो फकीरी मिजाज रखते हैं, ठोकरों में अपने ताज रखते हैं, उन्हें फिक्र नहीं होती कल की वो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, 127 बिना किसी नुकसान के। माचिस तो वैसे ही बदनाम है, आग तो इन जनाब ने लगा रखी है अपनी बल्लेबाजी के बूते। सोनू चौहान टीम की शान है, वाइड का इशारा है और रन भी मिलते हुए हैं और ये क्रीज में पहुंच चुके, तेजी से रन पूरा किया है। इतना समय था कि विकेट कीपर गेंद को उठाए और स्टंप में मारे, तब तक यहां पर रन पूरा हो गया। सब कुछ नजर आया बल्लेबाजी में। डैक्सको के कप्तान मैं के चेहरे पे मुस्कान साफ नजर आ रही है, लेकिन पहले दर्द ने रुलाया भी तो है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना मेहनत के कोई चमक सकता नहीं, जो दिया जल रहा है उसी से तो उजाला होगा। और ये पैड लाइन पे गेंद, फिर से वाइड का इशारा है, लेग स्टंप के बाहर कर बैठे हैं। दबाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है गेंदबाजों के ऊपर। वाइड के साथ एक सिंगल भी भागा है दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर पहुंचा दिया 131 रन, मंजिल करीब आ चुकी है। भवन से लड़ो तुम तो लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। और इस बार हवा में है लेकिन खिलाड़ी कोई नहीं है। जब आपके अंदर हौसला है, डर को इन्होंने ताक पे रखा है और हौसलों को इन्होंने परवाज दी है। आसमान की बुलंदी पे जाने का इन्होंने इरादा जो दिखाया है, जिस जज्बे के साथ इन्होंने अपने कदम को मैदान पर रखा है, अब वो सब कुछ आसान नजर आ रहा है। 132 रन बने हैं अभी तक, प्रीत 58 और सोनू 68 पर। और ये शॉट है, और ये शॉट है, खिलाड़ी के बस की बात है, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ ही वीज ऑन मैक्सिमम सिक्सेस की अवार्ड की लिस्ट में इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और स्कोर पहुंचा दिया है 138 बिना किसी नुकसान के। T20 83 मैचों में जो पहले विकेट की साझेदारी है, वो सबसे बड़ी साझेदारी पहले थी हजरतुल्लाह जदई एहसान गनी के बीच में 236 रन की साझेदारी, लेकिन यहां पर जरूरत नहीं है। और इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस जज्बे से बल्लेबाजी की है, अभी पारी के 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 60 गेंदों से ताबड़तोड़ 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और पारी के 48 गेंदों में 138 रन बटोर डाले दोनों बल्लेबाजों ने। अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से बल्लेबाजी हुई। आकाश में सिर्फ तारे की बजाय गेंद नजर आई है और पीसीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मैदान पर दफा न्यूज़ प्रो कॉर्पोरेटली कॉर्पोरेट का वर्ल्ड कप 10 साल बेमिसाल रहे इस टूर्नामेंट के, 10 गोल्डन ईयर, और इस टूर्नामेंट की अपनी एक पहचान रही है। बहुत ही बढ़िया। और यह दिखाया है कि चुनौतियों को चुनौती देने का जज्बा होना चाहिए, तूफानों को आग दिखाने का रुतबा होना चाहिए, तूफानों को आग दिखाने का रुतबा होना चाहिए। ये परेशानियां भी आपसे टकराने से डरे, ये तूफान भी आपसे टकराने से डरे। कुछ ऐसे चुनौतियों पर, ऐसी मंजिलों पर अपना दबदबा होना चाहिए।
अभी 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 138 रन बोर्ड पे है और आज यादगार पारी खेल रहे हैं 138 फॉर नो। कप्तान मयंक मैदान पर पहुंचे, अपने दोनों खिलाड़ियों को शायद यही कहा होगा कि जब आपने शुरू कर दिया है तो अंत भी आप ही करके आए, और कह रहे हैं कि 2 ओवर में खत्म करेंगे, लेकिन ये आपकी ख्वाहिशें हैं, ये तमन्ना है, ये आरजू है, क्या पूरी कर पाएंगे दोनों बल्लेबाज ये समय बताएगा। लेकिन कह रहे सांस ले लो थोड़ी, ये सांसें लेने का समय नहीं है, ये आगे बढ़ने का समय है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। यही तो पीसीएल है, यही अपने खास पहचान के लिए जाना जाता है। आपने टूर्नामेंट तो बहुत खेले हैं, लेकिन जो पीसीएल में जो आपको पहचान मिली है वो अपने आप में सबसे अनोखी और सबसे खास है। यही कारण कि 10 साल बेमिसाल रहे हैं, आपकी सहभागिता, आप सबके साथ की वजह से ये इसे बुलंदी मिली है, और उसमें इन स्पॉन्सरों ने जो योगदान दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा। स्पॉन्सरों ने नहीं होता, स्पॉन्सर सुनो। हाँ, अरे तो रो जाता है ओपन कर स्पीड वाले हम नए ओवर की शुरुआत हो रही है और इस बार नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद पर सिंगल के साथ अपना छोर बदल रहे हैं सोनू चौहान। डीप मिड विकेट बाउंड्री से गेंद को फील्ड कर रहे हैं। 139 रन बन चुके हैं, एक 68 पे, दूसरा 69 पे। एक ने 23 गेंदें खेली है और दूसरे ने 27। एक ने 8 चौके मारे, एक ने 5 और छक्कों में 6-4 का फासला, यानी कि 2 छक्के का फासला है। इस बार अच्छा संपर्क नहीं है, फिर भी 1 रन लेने का मौका है। 140 रन। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफें, लेकिन ये ठोकरें आपको चलना सिखाती है। 140 रन बन चुके हैं और इस बार फिर से स्टेप आउट करके बाहर निकले, क्रीज छोड़कर गेंद की पिच तक जाकर गेंद को खेला है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद आ रही है, 1 रन लेने का मौका है। इतना काम खुद नहीं कर सकते, स्कोरिंग भी खुद ही कर सकते। अरे यार भाई ऐसा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम, भूल जाते हैं हम। मैं गाने भी चला 141 रन। तुम जीनियस आदमी हो, जाहिल आदमी। दारू भी पीता हूं। चलिए, और इस बार अंपायर का काम सिर्फ हाथ हिलाना, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, और बल्लेबाजों ने कहा बाएं बाएं। दोनों 70, 145। दोनों ही बल्लेबाज 70 पे है। क्या बल्लेबाजी की है, रनों की भूख है, दिलों में अरमान है, ख्वाहिश, तमन्ना है अपनी टीम को आगे ले जाने की। पर आज प्रीत बालियान और सोनू चौहान इस पारी को भूलेंगे नहीं। इनके कैरियर का ये स्वर्णिम समय है, अपने फॉर्म के शबाब में है और अपने शिखर पर है ये दोनों। जिस फॉर्म में, जिस लय में नजर आए हैं, इन्हें रोकना बेहद मुश्किल नजर आया है। और कहावत है, रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस बार कदमों का इस्तेमाल और हवा में गेंद, कोई स्टॉप किया है गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और छक्के के लिए। बहुत ही 151 रन हो चला है, 9वें ओवर का खेल चल रहा है। 1 के 5 छक्के। आज तो सुनामी आई है इन दोनों बल्लेबाजों से, कैसे पार पाए। 151 बोर्ड पे हैं, 8.5 ओवर का खेल हुआ है पूरा। और इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, लॉफ्ट शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और छक्के के लिए। मंजिलें लाख कठिनाइयों गए, मंजिलें लाख कठिनाइयों में गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो रुक जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहां है वो लोग जो ये कहते थे रास्ते में बिखर जाऊंगा। गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए और दोनों ही बल्लेबाज एक जैसे स्कोर पर है, यानी कि छक्कों पे एक ही जैसे। छक्कों की बात कर रहा हूं मैं, वीज ऑन मैक्सिमम सिक्सेस। और 9 ओवर के बाद स्कोर है 157 रन, 157। और इस बार कवर बाउंड्री के बाहर, ये खिलाड़ी नहीं है, केवल दर्शक है।
हाथ पूरी तरह से बंधे हुए बल्लेबाजों ने तो आज लुत्फ उठाने का इरादा दिखाया है, जज्बा दिखाया है और आज इनकी सुनामी आई है। सुनामी में सब बहते जा रहे हैं और इस बार अच्छी गेंद क्रॉस लाइन पैडल स्विप, मिड विकेट के ऊपर से स्लॉक स्विप करने की कोशिश थी और इसी के साथ ही पहली सफलता, आखिरकार सफलता मिली है बहुत देर के बाद। लेकिन क्या यादगार साझेदारी, यादगार पारी खेली है। 169 रन की जरूरत है, रन बने हैं 161 माफी चाहूंगा, 9.1 ओवर के बाद 161, यानी कि अब यहां से मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, केवल 8 रन की दरकार है। और बर्थडे बॉय पवेलियन आ रहे हैं, डगआउट से खिलाड़ी खड़े होकर के उनका स्वागत कर रहे हैं, क्लैपिंग की जा रही है, तालियों की गड़गड़ाहट है और उनका भव्य स्वागत है। नए बल्लेबाज अश्विनी नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं, लेकिन काम को आसान कर दिया है अश्विनी ने। बल्लेबाज प्रीत बालियान नॉन स्ट्राइकर एंड पर क्या गजब की शुरुआत की है और इसीलिए कहते हैं कि मंजिलें कितनी भी कठिन क्यों ना हो, डगर कितनी भी हवा में गेंद, लेकिन मिड ऑफ पर कोई खिलाड़ी नहीं है, सिंगल लेने का मौका है। सिंगल के साथ स्ट्राइक देंगे प्रीत बालियान को। 7 रन की जरूरत है, 162 एक विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की गेंदें अगर देखी जाए तो 3 हुई है। ये अच्छी गेंद है पढ़ने के बाद और प्रीत ने कहा थोड़ा सा प्यार दुलार भी दिखा दिया जाए। 162 रन, जिस गति से रन बनाए गए हैं 16.76 रन प्रति ओवर की रन औसत से रन बनाए हैं। क्या टर्न हो रही है गेंद, शायद स्पिनर्स को लाने में थोड़ी सी देरी कर दी है। स्पिनर बन गया पेसर, नहीं दूसरा पवन खुद ये एंड्रयू साइमंड्स की यादें ध्यान में ताजा कर रहे हैं। पूर्व में तेज गति से गेंदबाजी की और अब क्या अभी डैक्सको किसी बॉलर ने बैटिंग करी है, ऐसा निश्चित भाई कह रहे हैं तुम मत बोल। और इस बार मिड विकेट सीमा रेखा की ओर दर्शक बनेंगे खिलाड़ी, क्योंकि आउटफील्ड बहुत तेज है और इसी के साथ ही स्कोर पहुंच चुका है 166, एक विकेट के नुकसान पे 166 आफ्टर 10 ओवर कंप्लीट। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। मात्र यहां से 3 रन की और दरकार है मुकाबले को जीतने के लिए। और एक जिस तरह की प्यारी खेली है, प्यारी बहुत ही बढ़िया पारी खेली है सोनू चौहान ने। प्रीत बालियान अभी भी नाबाद है और स्ट्राइक अश्विनी के पास। अरुण सोलंकी गेंदबाजी की कमान संभाल रहे हैं और ये शॉट अच्छा है, बिल्कुल लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक बाउंड्री से आकर लंबी जर्नी के साथ गेंद को उठाए 1 रन लेने का मौका। स्ट्राइक प्रीत बालियान के पास 167, 2 रन की जरूरत है। इस बार कदमों का इस्तेमाल, लॉफ्ट शॉट, हवा में गेंद ज्यादा है, लंबाई मिली नहीं है और खिलाड़ी ने कैच ड्रॉप कर दिया है। ऐसे काम चलता नहीं है, आप फिर सोचते रहे। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। स्कोर लेवल ऑफ स्टंप के बाहर ये वाइड स्कोर, वाइड दे दिया, हो गया, खत्म हो गया, विन। और क्या कैच। इसी के साथ ही मुकाबला जीता है डैक्सको ने और इस मुकाबले को 9 विकेट से जीता है। इस मुकाबले को डैक्सको ने 9 विकेट से जीता है। प्रीत बालियान के द्वारा जबरदस्त बल्लेबाजी।